Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. The Tripura Congress has hit out at the centre over what it calls a premature and unexplained ceasefire with Pakistan following Operation Sindoor. Addressing a press conference in Agartala, senior Congress leader and CWC member Sudeep Roy Burman questioned the timing and intent behind the move. Burman said the country stood united, setting aside political differences, expecting a strong response to cross-border terror. He praised the armed forces for their precision but questioned why the government chose to halt operations without any concrete terms. He also raised concerns over the cancellation of the Prime Minister's Kashmir visit, alleging an intelligence failure that the government has refused to acknowledge. Burman accused the government of trying to create a false narrative around the attack site, claiming it was open to civilians. The Congress leader also criticized India's diplomatic handling, pointing out that while global condemnation followed the terror attack, few nations stood firmly with India during rising tensions. He demanded the Prime Minister come clean on all these issues. हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता। जैसे अभी ट्रम्प ट्रेड के धमकी देकर सीज़फायर करवाया, उस दफे 71 में निक्सन साहब भी हम 7th फ्लीट भेजेंगे बे ऑफ बंगाल में इंदिरा गांधी को धमकाया था, लेकिन इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटा। हमने पाकिस्तान तोड़ के नया बांग्लादेश करके दिखा दिया था। 93 सोल्जर सरेंडर करके दिखा दिया था। ये मौका था, हमने गवाया। देशवासी इस कायरतापूर्ण प्रधानमंत्री के आचरण से हम शर्मिंदा है, हमारा सिर झुका हुआ है। इंडिया का नाम दुनिया में अपने मिट्टी में मिला दिया है। देशवासी आने वाले दिन में सही जवाब आपको देने के लिए तैयार है। हो सके हिम्मत है तो मेरा जवाब, मेरा ये जो प्रश्न आप खंडन करके देखिए। धन्यवाद। আজকের এই প্রেস বার্তা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। মাননীয় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আজকে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে একটা প্রেস মিট করার জন্য। আপনারা জানেন অপারেশন সিন্দুর গত 22 তারিখ পেহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে মে মাসের 7 তারিখ অপারেশন সিন্দুর শুরু হয় এবং 3 দিনের পরে সেটা বন্ধ হয়। উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই অপারেশন সিন্ধু তার কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি পলিটিক্যাল লাভালাভের জন্য এটাকে এখন নোংরা রাজনীতি হিসেবে তারা ঢাল হিসেবে তারা ব্যবহার করতে চাইছে। The Indian Army Spare Corps organized an ex-servicemen rally on 14th May 2025 in Senapati, Manipur, attended by over 520 veterans, 13 Veer Naris, 5 Veer Matas and their families. Lieutenant General Abhijit S. Pendharkar, GOC Spare Corps, was the chief guest, accompanied by Major General S.S. Karthikeya and other dignitaries. The rally honored the sacrifices of veterans and their families and provided welfare services including medical checkups, pension assistance and career guidance for youths. A solemn moment of the event was the special felicitation of gallantry awardees and Veer Naris whose sacrifices and bravery continue to inspire generations of soldiers and citizens alike. The ex-servicemen rally in Senapati emerged not only as a vibrant celebration of valor and service but also as a reaffirmation of the unwavering loyalty to the nation by the veterans.
A Pakistan supporter was arrested on Thursday in Sri Bhumi for insulting the Prime Minister. A youth was arrested for distorting a message given by PM Modi to the nation and posting it on Facebook. Sri Bhumi police arrested a youth named Abul Hussain from Kaliganj who supported Pakistan. The arrested youth edited the Prime Minister's message and propagated that India had bowed down to Pakistan. पाकिस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान पर हमला करके इसकी वजह से पाकिस्तान सेना ने हमें दिन में तारे दिखाए हैं। हम हार गए और आप लोग जीत गए। As part of the observance of World No Tobacco Day and to raise awareness among the public about the dangers of smoking and tobacco consumption, Alpha English Higher Secondary School Nongpo organized a public awareness rally today, May 15th. The rally began from the school premises and proceeded through the town of Nongpo before concluding back at the school courtyard. The primary objective of the event was to highlight the harmful effects of tobacco use. During the rally, on the main roads of Nongpo, students raised slogans to spread awareness, especially urging people to refrain from using tobacco in any form. They emphasized that tobacco seriously affects human health and damages various parts of the body. In the rally, W.K. Blah, principal of the school, stated that the initiative was organized to campaign against the dangers of tobacco. She added that the school aimed to educate not only students but also the general public as part of the broader observance of World No Tobacco Day. Alright, this is a very important awareness that we can create, and we from the school level. Look the side, that is why this is very important. Why? Because this has become a serious health issue. Using tobacco has become a serious health issue. And that is why creating awareness at the school level for you to know the bad effects and for you to understand that you should not start or form the habit of smoking, chewing tobacco at the early stage will help you develop a good health and will help you keep away from this bad habit that will cause addiction and serious health problems in the future. India, for the matter, we have, it's almost a cultural use of tobacco. And in the state of Meghalaya, we have a large number of cancer cases because or as a result of tobacco chewing. And that is why we are here making you students of Alpha School number 1 to understand the bad effects and the bad effects of tobacco and how not to get habituated to having it. We have our parents who used to smoke and chew kaini and kutka and shikar and all of that. And some of you are following the habits, but please, maybe they have not learned. But for you, you have learned. And we are creating that awareness now so that you boys and girls can learn not to get habituated or not to start touching tobacco at all. And also to pass on this message of not using tobacco because it is a serious health issue. It will be a health problem. All of us, God created us a beautiful, wonderful body where we should not spoil that by using things that will cause harm to it. We want you boys and girls to be healthy and strong now and healthy and strong in the future.
So we thank the Education Department of having made this program, like so to say, every school must do this, must create this awareness so that our district, we have healthy students, or state and the nation as a whole. So we'd like to thank. A massive Tiranga Yatra was held in Silchar on Thursday to celebrate the success of Operation Sindoor and the decisive leadership of Prime Minister Modi and the Indian Army. Despite heavy rainfall, the event witnessed enthusiastic participation from citizens, students and members of various organizations. The march began at the Silchar District Sports Association premises and proceeded through city streets, showcasing strong patriotic spirit. The Yatra was a tribute to India's response to the April 22nd terrorist attack in Pahalgam, where 26 innocent tourists were killed. In retaliation, the Indian Army launched Operation Sindoor, targeting terrorist bases in Pakistan. The event concluded at Rangir Khari, with dignitaries including Minister Kaushik Rai, MLA Dipayan Chakraborty, District Commissioner Mridul Yadav, and SP Numal Mahata in attendance. কাছাড়বাসী দেশপ্রেমিক সম্মানিত নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় এক তিরঙ্গা যাত্রা আপনাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেভাবে অপারেশন সিন্দুরকে সফলতা দিয়েছে, সফল করে এনেছে, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন নাগরিকরা আজকে মিছিলের ব্যবস্থা করেছেন, এই তিরঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা করেছে এবং শিলচর শহরে বিভিন্ন সংগঠন, কাছাড় জেলার বিভিন্ন সংগঠন, কাছাড়ের নাগরিকদের পক্ষ থেকে এই আয়োজিত করা আজকে তিরঙ্গা যাত্রায় আমরাও সামিল হয়েছি এবং আমরা সবাইকে যে পাকিস্তানকে যাতে যোগ্য জবাব আমাদের সরকার দিতে পারে, সেনাবাহিনী দিতে পারে। The long-standing issue of artificial floods in Guwahati continues to trouble residents, particularly in low-lying areas. In a bid to address the problem, Assam Public Health Engineering Minister Jayanta Malla Barua conducted an inspection of several flood-affected zones in the city on Thursday. Minister Barua, while talking with the media, acknowledged the ongoing challenge of artificial flooding in Guwahati, stating that while progress has been made, full control has not yet been achieved. As part of the flood-free Guwahati mission launched last year, various departments including the PWD were given specific deadlines. He reported that 90% of the work is on track, but around 30% of areas still require urgent intervention, with orders issued to complete pending tasks within 3 days. Meanwhile, residents of Rukmini Gaon voiced frustration over repeated flooding and inadequate drainage. They criticized poor planning and execution, pointing out that despite installations of pumps and drains, the measures remain insufficient. With the flood season nearing, residents remain cautiously optimistic that the government's intensified efforts will result in lasting solutions. गुवाहाटी का जो आर्टिफिशियल फ्लड है या तो फ्लैश फ्लड है, उसका बहुत बड़ा एक समस्या था और अभी भी ये समस्या पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आज मैं पूरा गुवाहाटी का जो सेंसिटिव एरिया है, सब एरिया को मैं खुद विजिट कर रहा हूँ और लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से हम लोग फ्लड फ्री मिशन गुवाहाटी का हम लोग काम कर रहा था और उसी हिसाब से सबको टाइम लाइन देके हम लोग काम करने के लिए दिया था। PWD हो, दूसरा डिपार्टमेंट हो, एकदम टाइम लाइन देके हम लोग काम करने के लिए दिया था और वही काम टाइम लाइन में हो रहा है कि नहीं, वो भी हम अभी देख रहा हूँ। और मैं अभी देखने का बाद ये पता चला कि 90% टाइमली हो रहा है। कोई एरिया में कुछ ये है 10% ऐसा है जिसको हम अभी तुरंत करना पड़ेगा और ये काम करने के लिए हम लोग 3 दिन का मोहलत दिया हूँ। सब लोगों को बोल दिया 3 दिन का अंदर ये काम कंप्लीट करना है। लेकिन हमारा
कोशिश ये रहेगा जिस एरिया में पहले 2 दिन तक पानी नहीं निकलता था, कम से कम 2 घंटा में निकालने का कोशिश करें। जहाँ 10 घंटा नहीं निकलना था 1 घंटा में निकल जाए, ऐसा माहौल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और कहीं कहीं जगह में नया पंप लगाना, कहीं जिस एरिया में ज़्यादा पानी आ जाता है उसको डाइवर्ट करके दूसरा जगह ले जाना, ये सब हम लोग प्लान में था। और वही प्लान को मैं आज देख रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये डायरेक्शन दिया गया है, जो वहाँ ज़्यादा देर फेंक के नहीं रख सकता है, तो वो भी डायरेक्शन है। आप लोगों के जो बात बोला है वो भी हम नज़र में रखता हूँ, क्योंकि सानमरी में लास्ट जो थोड़ा बहुत फ्लड हुआ था उस टाइम में ये बात निकल के आया था। लेकिन जब हम स्पेशली उस एरिया का विजिट खबर लिया था तब ऐसा बात चला जाए, ये एकदम 100% नहीं है, उसका अलग रीज़न भी है, वो भी एक रीज़न है, तो उसको भी हम करने के लिए डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ। 3 साल से अभी पानी ज़्यादा हो गया। क्या हो गया कि वो चीना की पोत जो है एक ड्रेन काट दिया, काट करके यहाँ में पाइप लगा, माने पंप लगा दिया। लेकिन इतना एरिया ये पानी ड्रेन से पानी नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिव नेगेटिव और एक ड्रेन बनाना चाहिए, नहीं होने से ये प्रॉब्लम ऐसे ही रह जाएगा। मिनिस्टर आने से तो कैसे ठीक हो जाएगा? मिनिस्टर एक बार देख लेगा, देख करके चला जाएगा, वो लोग क्या बातचीत करेगा ये तो हमारा मालूम नहीं होगा। लेकिन हमारा सॉल्यूशन ये है कि ये जो रुक्मिणी गाँव रुक्मिणी नगर एरिया में कहाँ से पानी लेके यहाँ में लगा दिया, ये पहले ज़रूरत है। ये ड्राइंग पहले जानना चाहिए। लेकिन ये ड्रेन से पानी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव और 1-2 कहीं से पानी निकालना, रास्ता निकालना पड़ेगा। रुक्मिणी गाँव का पब्लिक है, वो पब्लिक ने ये ड्रेन नक्शा बना दिया। उस लोगों ने बोल दिया इधर से ये सिनाकी पोत चाहिए है, सिनाकी पोत से एक ड्रेन बना दो, अंडरग्राउंड ड्रेन, और बाहिनी में पानी फेंक दो। उन लोगों के हिसाब से ये ड्रेन बनाया। जब ड्रेन कंप्लीट हो गया तो पानी आउटलेट नहीं है, वो तो पंप लगाना पड़ता है इधर, तो वो लोग ही कंप्लेन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जितना फंड यहाँ ज़रूरत होता है सब तो देता ही है, लेकिन हम लोग का नज़र से ये देख रहा हूँ हम, जो एग्जीक्यूशन इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। जो लोग एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उन लोगों का वी आर सफरिंग ए लॉट। Union Minister of Communications and Minister for Development of the Northeastern Region, JioTV Scindia, chaired a press meet for the Rising Northeast Investor Summit on May 14th. In his address to the media, Union Minister JioTV Scindia said that the greatest potential for India in the future is the wonderful northeastern regions, stating that the event will showcase the 8 states which stand at the heart of the transformative growth that India represents. He said Northeast's cultural tapestry, along with the reservoir of natural resources and the strategic geographical positioning of the Northeast, translated the region into the most powerful gateway in the world to Southeast Asia. The Union Minister invited all to witness the dawn of new era for Northeast region, which promises prosperity not only for Northeast but for the rest of the country and Southeast Asia. Scindia informed that Prime Minister Modi has consented to grace the occasion. Seated on the dais with me, my colleague in the ministry, respected Sukanta Mazumdar Sahib, Secretary Donor, to be held, as Secretary Sahib said, on the 23rd and 24th of May, which is next Friday and next Saturday, at Bharat Mandapam. And this is an event that will really showcase our wonderful Ashtalakshmi, our 8 states that today stand at the heart of the transformative growth that our country represents. The Prime Minister's resolve, his commitment, his vision to ensure that the northeastern region becomes the pivot
for the future growth and the future path of India as she advances towards her goal of Viksit Bharat by 2047. And we're seeing the effect of that. Over the last 10 years, whether it is the 10% of gross budgetary support amounting to almost 1 lakh crore a year that's being ploughed into the Northeast, whether it's the tax devolution, whether it is different arms, the private sector and others taking that leap forward. Today, the Northeast that was always considered prior to a decade ago as the periphery of India has become the center of the growth story of India. Our 8 states together as an amalgam, not that one is an outlier, but all 8 states, on a decadal basis, growing at between 12 to 13% on a CAGR basis. Unheard of, unseen of, unexperienced. But truly they are the growth engine of India's economy on this day as we go forward. You have a combination of one of the richest cultural tapestries ever known to man, along with the most abundant reservoir of natural resources. And that's all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.